Good morning, students. So, welcome to our new lecture. We have studied, or we are studying chapter number one, that is natural resources, air, water, and land. Okay, in the last lecture, we have studied about the water pollution. Now, in this lecture, we are going to study about the land, and we know what is land. It is lithosphere. Okay, so there are four spheres. We have studied in this about these spheres in the first lecture. Okay, atmosphere, hydrosphere, and lithosphere and biosphere. Okay, so we have studied about the atmosphere and hydrosphere in the previous lecture. Now in this lecture we are going to study about lithosphere, which is nothing but land. Okay, so before going to the topic, let us see some questions. What is land made up of? Okay, land किससे बना है, जमीन किससे बनी है? सो हमारा आंसर क्या होगा कि जमीन मिट्टी से बनी है. तो मिट्टी क्या है? What is this soil? Okay, so land is made up of soil, rocks, okay, boulders. You will see and types of mountains, types of plains and plateaus. Okay, so this is land, but this land is not flat everywhere. As the question is asked, is land flat everywhere? No, land is not flat everywhere. Now, what do you see on land? What we see on land? We see there are houses on land, there are plants, there are mountains, there are other animals. We human beings, we all are living on land. Okay. Then what we have created on land? What we have created buildings, factories, okay, houses, playgrounds. So we have created a lot of things on land, and we perform agriculture. Okay, what we do, we perform agriculture on land. Now if a deep pit is dug in the ground, what do you find there? Now if we dig a hole in the ground and to a greater depth, what we will find, we may find some water. Okay, we may find groundwater, we may find minerals, we may find metals, metallic ores. Okay, सो अगर हम लोगों ने गड्ढा किया है बहुत बड़ा जमीन के अंदर, तो हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, फ्यूल मिल सकता है, हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. ओके, सो लैंड भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है. सो लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. ओके, now land is seen in the form of stones, soil, big rocks. Okay, you will find that land have stones, soil, and big rocks. Okay, it is not flat everywhere. It is hilly in some places and flat in others. So land is not flat everywhere. Okay, at some places it is hilly. Hilly मतलब क्या? Hills है, mountains है. Okay, and at some places it is flat. For example, plains and plateaus. Okay, all terrestrial animals, including man, live on land. Terrestrial animal मतलब क्या? What is terrestrial animals? टेरिस्ट्रियल मतलब ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं. कहाँ पर रहते हैं? जमीन पर. सो द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज टेरिस्ट्रियल एनिमल्स. सो ऑल द टेरिस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड. ओके, some terrestrial animal dig burrows in the ground for shelter. कुछ terrestrial animal ऐसे होते हैं जो होल करते हैं जमीन में, और फिर होल करके उस होल के अंदर, उस बरोस के अंदर क्या होते हैं? रहते हैं. तो फॉर एग्जांपल रैबिट, स्नेक. ओके, देयर आर सेवरल इंसेक्ट्स which also live inside the burrows, okay, which they dig in the land. This means that they use land for fulfilling their need. What does it clarify to us? That we use land for our own need. We also use land for farming and for building houses and roads. What we have done on land, we use farming methods, we produce crops on land. Okay, we build houses, and we have built roads on the land for transformation, for traveling. Then we make use of plants and animals in the forest that grow on land. So we plant trees, and the animals which live in forest, we use both the sources. Okay, the minerals, crude oil, and natural gas. Now this is important sentence. The minerals,
crude oil and natural gas obtained from the earth, that is land, are very important for us. They are very important for us. So we get minerals from the land, we get crude oil, okay, and this crude oil is again uh, refined, and we get then petrol, diesel, kerosene, okay. Then natural gas is also obtained from the land, and this all sources are very much important to us, okay. Now it means that land is an important resource. Let us see what land is made up of. अब लैंड इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब हमें ये देखना है कि लैंड किससे बना है, ओके। सो we can find this from a simple experiment. Take a transparent plastic bottle, एक प्लास्टिक का बॉटल लो जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में देख सकते हैं। सो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लो। अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, टेक एन हैंडफुल ऑफ सॉइल, some stones, sand, some dry leaves and water, ओके। और हमें उसको इस तरीके से प्लेस करना है, ड्राई लीव्स पहले, फिर सॉइल, फिर वापस सैंड, फिर स्टोन्स, फिर बड़े स्टोन्स, ऐसे हम लोग को उस बॉटल के अंदर डालने हैं। कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, हम लोग ने बॉटल को आधा काट दिया है, ओके। पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर, सारे मटेरियल्स को डालना है और फिर क्या करना है, पानी ऐड करना है। क्या करना है? पानी ऐड करना है। स्टर द मिक्सचर thoroughly and put it aside. Observe it next day and answer. हम क्या देखेंगे कि जो सबसे लाइट सॉइल होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, फिर जो सैंड होगा वो उसके नीचे होगा, और जो स्टोन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से नीचे बैठ जाएंगे पानी के, ओके। और जो ड्राई लीव्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, दैट सॉइल जो है वो लाइट है, और क्या है, उसका साइज क्या है, सैंड से कम है, और सैंड का साइज क्या है, स्टोन्स से कम है, और स्टोन्स का साइज क्या है, बड़े बड़े जो बिग स्टोन्स है उससे कम है, ओके। नाउ द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure. Okay, in this figure also you can see जो ऊपर की सतह होती है, अपर लेयर जो होता है लैंड का, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ओके। और जो नीचे का लेयर होगा लैंड का वो क्या होगा, हार्ड होगा, okay. If the land has mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animals. This layer is called humus. जो topmost layer होता है soil का, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लेयर है सॉइल का वो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने के बाद तैयार हुआ है, okay. It is usually found in the dense forest. The land below this is full of sand, soils, small stones, worms and insects. Soil and pieces of bedrock are found below this layer of land. और इसी लेयर के नीचे, मतलब ह्यूमस के नीचे, हमें सैंड देखने मिलेगा, स्मॉल स्टोन्स देखने मिलेंगे, ओके। और इंसेक्ट्स भी सर्वाइव करते हैं इनसाइड दिस पर्टिकुलर लेयर विच इज कॉल्ड एज ह्यूमस, ओके। And below this layer the soil which is present, it is immature soil, immature soil है, okay. Further below this layer the proportion of soil decreases and that of rock increases. जैसे जैसे हम लोग अर्थ क्रस्ट में नीचे जाते जाएंगे, हमें क्या देखने मिलेगा कि जो सॉइल का प्रोपोर्शन है वो लेस होते जाएगा, और रॉक्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। सो आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एज वी गो डाउन द अमाउंट ऑफ रॉक्स इज इंक्रीजिंग, जो रॉक्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और नीचे हमें क्या देखने मिलेगा, सिर्फ रॉक्स देखने मिलेंगे, ओके। द मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव फ्रॉम द रॉक्स, और जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, क्रूड ऑयल, मेटेलिक ओर्स, नेचुरल गैस, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये रॉक्स के लेयर से मिलता है। कहाँ से? रॉक्स के लेयर से। सो दिस इज, that is why soil in different region is different. The color and texture of soil are both determined by the bedrock. Always remember that the color of soil or the amount of soil or the type of soil which is present in the region are different with respect to the climate, okay.
अगर क्लाइमेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो सॉइल प्रेजेंट होगा वो पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, so this is about the land. We have studied about the introduction to this part. Okay, in the next lecture we will see how the soil is formed. Okay, so thank you.